CS Executive Registration 2023. The Institute has prescribed an online mode for registering for the CS Executive exam. This online registration can be done throughout the year at any point in time. Registration has to be done on the official website of the Institute of Company Secretaries of India. The exam is conducted twice a year. Depending upon the time of registration, the due date of the exam is allotted to the candidate. It is to be noted that the candidate thinking of getting himself registered to the BMPMB the file must note the eligibility criteria as mentioned above. Steps for registration for CS Executive by the students. 1. Opening of the website of the Institute of Company Secretaries of India. To get registered, first, open the website www.icsi.edu in any web browser. Register for CS Executive. 2. The second step would be to click on the icon appearing as online services on the page opened. 3. After clicking on this button, a drop-down menu will start appearing showing different options of all online services being provided by the Institute. Out of all these, we have to click on the Register for CS Course option. 4. After clicking the Register for CS Course option, the following window will appear with a lot of options and text including certain guidelines, instructions, etc. 5. Before proceeding further, the student has to ensure that soft copies of the following documents are ready and available on the same computer through which the registration is being done. Photograph of the candidate. Signature of the candidate. DOB certificate, 10th pass certificate. Qualification certificate, 12th mark sheet or certificate of Icsi/ICMA/final pass certificate. Category certificate, other than general. Identity proof Aadhaar card/passport/voter ID, PAN card/driving license/ration card. 6. Guidelines given by the Institute need to be followed before going further. 7. Tick the options in the appropriate boxes and proceed further and click the button Proceed for registration. After clicking, a new page will be opened. This new page will show two options, New Registration and Incomplete Registration. Now you're doing it for the very first time, then click on New Registration and if you have unique ID no, then select Incomplete. 8. All basic details are required to be filled, which includes following: full address including country, state/province, district, city, postal code, confirming the permanent address in the same manner. After filling in all the details, click on the Next button. 9. After this a new page will appear showing the following options. After entering the basic details, a unique requested will be generated which the student has to take into account. The confirmation will be sent to the registered mobile number. 10. After noting the registration number, click the Next button. 11. Then the next information to be filled includes the details regarding educational details of the candidate, which includes details from 10th till graduation or 12th as the case may be. 12. The next step is to upload all the documents as mentioned at the beginning of the registration process. The uploading should be confined to the prescribed format and size only. 13. Uploading of mandatory documents. Rest will depend upon the type of category of student who is applying for. 14. Undertaking given on the page has to be ticked by the student before proceeding further. After that, click on the option given as Next to proceed further. 15. Next step would be a preview of the application made by the student to cross-check all the details entered by the student. 16. Then click on the confirmation button to proceed further. 17. After this, another screen will appear which will include the payment options. Several payment methods can be utilized to pay the registration fees. The registration fees for 2021 can be paid using online means. Candidates need to pay the fees for using the following payment methods: Axis Bank credit/debit card,
Kotak Bank credit/debit card, internet banking, UPI, wallets. BillDesk credit/debit card, internet banking, wallets, cash cards, UPI. Challan can be generated at any branch of Canara Bank. The steps for registration fees paid are as given below. Choose the preferred payment method. You will be redirected to a payment gateway. Fill in the required payment details. Pay the fees for CS Executive Registration 2023. A transaction log will be generated and informed to the candidate. 18. The next step is to make a payment for getting registered with the institute. After entering the amount of the fee, click on the next button. 19. After payment, the final step of registration will be completed. Candidates will be notified through SMS or email regarding the final registration. आप अपना जो रजिस्ट्रेशन लेटर है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कितना इम्पोर्टेंट रहता है आपका जो रजिस्ट्रेशन लेटर होता है जब भी आप CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करते हैं या फिर CS प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करते हैं। तो इस वीडियो में जो है कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो CS एडमिट कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है और रजिस्ट्रेशन लेटर, तीनों जो है बेसिकली अलग अलग होता है। एडमिट कार्ड तो केवल जब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट एक पर्टिकुलर लिंक देता है जिसके थ्रू आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन लेटर के ऊपर जो है जो आज हम बात करेंगे सो आगे आप जो है जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको जो है स्मैश पोर्टल पे लॉगिन करना है, smash.icsi.edu। ये वीडियो जो है CSEET के जो भी बच्चे हैं उनके लिए नहीं रहने वाला है, क्योंकि CSEET में केवल यूनिक आईडी मिलती है। जो आपकी यूनिक आईडी रहती है वो CSEET में केवल काम आती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको पासवर्ड की जरूरत नहीं है या फिर ये लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। इवन ये वीडियो भी जो है आपके लिए नहीं रहने वाला, ठीक है। बाकी CS एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के जो भी बच्चे हैं वो चेक कर सकते हैं, या फिर कोई भी बच्चे फाउंडेशन प्रोग्राम से चला आ रहा है, पुराने फाउंडेशन प्रोग्राम से, सो उनके लिए जो है ये हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने चेक किया कि आपको अपना जो स्मैश पोर्टल है वो लॉगिन करना है smash.icsi.edu। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, सो आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे मॉड्यूल सेक्शन में। स्टूडेंट सर्विस में एक तो आपको यहाँ से मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन लेटर, ठीक है, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन लेटर। यहाँ से जो है डायरेक्टली आपको जो रजिस्ट्रेशन लेटर हुए वो डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आपको जानना है कि आपको अपने आइडेंटिटी कार्ड, सो आइडेंटिटी कार्ड जो है यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। दोनों में जो है फर्क नहीं है, सभी डिटेल्स जो है आपको अपनी आइडेंटिटी कार्ड में भी मिल जाती हैं, रजिस्ट्रेशन लेटर में भी मिल जाता है। बट आइडेंटिटी कार्ड को जो है आपको अटैच करना होता है, और जब भी आप अपना एग्जाम देने जाएंगे तो आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है लेके जाना होता है एडमिट कार्ड के साथ, ठीक है। जहाँ पे जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन लेटर जो है केवल जो है संभाल के रखना है। जब भी आप सपोज आप PDF फाइल में अपने फोन में या फिर प्रिंट करके रखते हैं, सो ये आपके फ्यूचर में काम आएगा। इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका एड्रेस है, ठीक है। इसके अलावा जो है कौन कौन से सब्जेक्ट आप परस्यू करने वाले हैं। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, सो ये जो है प्रोफेशनल प्रोग्राम में है, सो इनके लिए जो है प्रोफेशनल प्रोग्राम के सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं वो शो हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हैं तो आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की जो सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नोटिस करना है, इनकेस जो है अगर आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलती है, वैसे तो मेरे चैनल में आपको हर तरह की हेल्प मिल जाएगी। इफ यू वांटेड टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी और इफ यू आर एस्पिरेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, फिर भी जो है रजिस्ट्रेशन लेटर में जो है कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो भी रहता है। इसमें आपको जो है प्री टेस्ट के बारे में बताया गया होता है। अगर आप ODOP के लिए जो है एलिजिबल हैं तो उसके बारे में बताया रहता है। कब कब जो है आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म जो है फिलअप करना है, उनकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, इसकी डिटेल्स रहती हैं। इसके अलावा अगर आपने चार्टर सेक्रेटरी जर्नल होती है उसके लिए सब्सक्राइब किया हुआ है, कि फीस जो है 500 रुपए पर एनम रहती है, तो उसके बारे में लिखा रहता है और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी रहता है, ठीक है। सिंपल सा जो है स्मैश पोर्टल में जाकर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन लेटर है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको किसी भी तरीके से अटैच करने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट यहाँ पे लिखता भी है, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड लेटर एंड इट डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर, यू आर एडवाइस। मतलब आपको जो है कोई भी सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है, किसी भी से अटैच करवाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे जो है और इसके अलावा जो है आपको ये कहीं भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। इनकेस जो है अपना एग्जामिनेशन सेंटर
अपना जो चैप्टर है, इफ़ यू आर टेकिंग द क्लासेस फ्रॉम आईसी साइड चैप्टर, सो आपको वहाँ पे भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे जस्ट फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस कि अगर आपको कहीं पे भूल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो एक बार जो है इसको गो थ्रू कर सकते हैं, अगर आप जो है किसी मेजर इश्यू में फँस जाते हैं। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया जो है, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? आइडेंटिटी कार्ड को जो है अटैच कराना होता है। इन केस अगर आप अटैच नहीं करा पाते हैं एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे, एग्ज़ामिनेशन से पहले, तो इस जो सीएस के आइडेंटिटी कार्ड है, इसके अलावा जो है आप कोई भी एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड ले जा सकते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है। कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है आइडेंटिटी कार्ड आप लेके जा सकते हैं विद एडमिट कार्ड, ठीक है? और एडमिट कार्ड को जो है अटैच कराने की ज़रूरत नहीं है। इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि किस-किस से जो है आप अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको अटैच करा सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हो सकता है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन लेटर है या फिर स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड है वो शो ना हो। वो रीज़न ये हो सकता है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टेटस है वो अप्रूव ना हो, ठीक है? अगर हम ये बात करें स्टूडेंट सर्विस में जाकर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करें, तो यहाँ पे बेसिकली अप्रूव होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे चेक करें एप्लीकेशन स्टेटस, सो अगर यहाँ पे अप्रूव के अलावा अदर है, जैसे कॉल फॉर एडिट रहता है, पेंडिंग टू अपलोड रहता है और रीसबमिट रहता है, ठीक है? अप्रूव के अलावा अगर आप कोई भी एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिख रहा है, सो हो सकता है कि आपको जो रजिस्ट्रेशन लेटर है और आइडेंटिटी कार्ड है ये शो ना हो। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। सिंपल सा एक जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूँगा कि कैसे आप अपना जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसको वेरीफ़ाई कर सकते हैं या फिर अप्रूव कर सकते हैं। वो लिंक जाके चेक कर लीजिएगा, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। What other courses you can do with CS, Company Secretary? Which would be beneficial for your career? Several learners have inquired about this concern. As a result, we've arrived with the solution. In this video, you will learn about the best option courses that you may do in addition with CS to advance your career. Learn about some of the most significant courses a CS student may take in addition to the CS, Company Secretary, program. The next sections will provide you with precise details regarding this topic. CS Students Alternative Courses. Along with the CS course, I am here to provide the greatest alternative courses accessible for CS students. Let's take a look at each one separately. 1. CA combined with CS. Along with CS, the course of Chartered Accountancy is also a desirable course. A substantial number of company secretary students are currently enrolled in a CA program. From the standpoint of handling secretarial and financial departments at the same time, the combination of CS and CA is also beneficial. When you start looking for CS employment, you'll see that employers want you to run their financial department or work in accounting and taxation. So I believe you'll be able to take advantage of those prospects if you get a CA certification. If you have a CA degree, it will undoubtedly be considered an advantage, and you will be able to handle the accounting department as well as the secretarial department with ease and confidence. You could be promoted to finance and company secretary director later on. This is another piece of advice based on my expert knowledge. 2. CS with LLB. Let us start with my personal favorite, the Bachelor of Laws. As a CS student, I recommend pursuing a Bachelor of Laws in order to pursue top management positions. In terms of course, content and awareness of the business world, a Bachelor of Laws is a great complement to CS. As a law graduate, CS is now required to undertake a variety of responsibilities. You'll be competent to manage the corporate business and administrative work if you have a CS plus Bachelor of Laws qualification. Liaising with top attorneys, representing the firm in court, and creating numerous contracts and agreements are all part of the legal and litigation profile. You may easily handle this type of profile if you have a Bachelor of Laws certification. 3.
Finance MBA with CS. With CS, you may pursue a master's in business administration from a reputable university, institute, or institution. MBA Finance will assist you in developing your skills and thinking as a financial analyst. MBA Finance will assist you with developing administrative abilities that, when combined with your regulatory and legal knowledge, will elevate you to a new level. 4. ICSI certification programs. ICSI has a number of courses for CS students and members that they can take in addition to their CS degree. Please check in the description box for all certification courses by ICSI. These classes include valuation, financial compliances, risk and compliance, and describes the skills and knowledge in the insurance industry, among other topics. They're all certification courses. 5. NCFM with CS course. If you're interested in the stock market, you might take the NCFM course sponsored by the National Stock Exchanges in Mumbai, NSE. NCFM is a well-known short-term course that gives solid working knowledge in a variety of security market categories such as derivatives, merchant banking, share trading, and FX, among others. It is also an excellent course to take in conjunction with a CS course. When you work as a CS for a publicly traded firm, your profile is inextricably linked to the security market. In that case, the NCFM course may teach you a lot about the security market. NCFM offers a variety of areas and certification courses, and you can enroll in any course that interests you. Please see the following link in the description box for Firth. Six. Certified Financial Analyst, CFA, CFA India. ICFAI, Institute of Chartered Financial Analysts of India, University regulates the Chartered Financial Analyst, CFA, program. It is essentially a distant learning program. This course is for students interested in pursuing a career in the investing business. Exams for the CFA are held 4 times a year. Qualified CFAs have excellent employment prospects in financial institutions such as banking and insurance. As a result, a CS may consider taking this course in addition to CS. So guys, these are some sort of course which you can consider while doing company secretary course. I hope you will like this video. Please support for more these types of video. Thanks again for clicking this video. In the end, don't forget to like this video and subscribe to the channel.